Assalamu alaikum dear students. In the previous class we have solved some questions of exercise 11.2 regarding three-dimensional geometry, and in that equations we were dealing with the lines. We were obtaining the angle between two lines. We were finding the sum of products of direction ratios and direction cosines of the lines, and here we are on question number 11 of the same exercise. And in that question number 11 we have two given lines expressed in terms of Cartesian equations. The equation of first line is x minus 2 divided by 2 is equal to y minus 1 divided by 5, and that's equal to z plus 3 divided by minus 3. This is the equation of first line. And the equation of second line in Cartesian form is again x plus 2 divided by minus 1 is equal to y minus 4 divided by 8, and that's equal to z minus 5 divided by 4. These are two equations of the lines, and we have to actually obtain the angle between them. Since अगर पहली इक्वेशन को देखा जाए तो दिस फर्स्ट इक्वेशन अगर हम इसे कंपेयर करेंगे किसके साथ, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a is equal to y minus y1 divided by b, and that's equal to z minus z1 divided by c. तो यहाँ पे x1 का वैल्यू और 2, y1 का वैल्यू 1 और z1 का वैल्यू -3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे सुप्लिट करना पड़ेगा z माइनस -3 बिकॉज इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ z माइनस z1. तो x1 का वैल्यू 2, y1 का 1 और z1 का -3 आएगा. तो ABC का वैल्यू क्या आएगा, 2, 5 एंड -3. But what are x1, y1 and z1? Coordinates of the given point through which the line passes. So line first is passing through the point 2, 1, -3 and is parallel to a vector with direction ratios 2, 5, -3. जब उस वेक्टर v1 के डायरेक्शन रेशियो होंगे 2, 5, -3, तो ऑब्वियसली वो वेक्टर v1 किसके बराबर आएगा, 2i plus 5j minus 3k. Similarly, we can for equation second we can say that this equation second is the equation of that line which is passing through the point -2, 4 and 5, right, and is parallel to a vector with direction ratios -1, 8, 4, means the vector v2, that's -i plus 8j plus 4k. तो जब इन दो लाइन्स में से दो वेक्टर्स आ रहे हैं तो फिर अगर थीटा इन दो लाइन्स के बीच में एंगल है तो थीटा इन दो लाइन्स के पैरेलल वेक्टर्स के बीच में भी एंगल है, क्योंकि पढ़ा है हमने अगर आपके पास दो लाइन्स हैं लाइक दिस एंड इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, फिर इस लाइन, सपोज ये लाइन फर्स्ट है, ये लाइन सेकंड है, लाइन फर्स्ट पे अपना एक पैरेलल वेक्टर होता है लाइक दिस और लाइन सेकंड का भी एक अपना पैरेलल वेक्टर होता है लाइक दिस. तो जिगर सपोज दिस इज वेक्टर v1 एंड दिस इज वेक्टर v2, तो अगर थीटा L1 और L2 के लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड के बीच में एंगल है तो यही थीटा वेक्टर v1 और वेक्टर v2 के बीच में भी एंगल होगा. और उसे हम फिर कैलकुलेट कैसे करते हैं, बाय द एक्सप्रेशन cos थीटा इज इक्वल टू v1 डॉट v2 divided by magnitude of v1 into magnitude of v2. The cosine of angle between two lines is equal to the ratio of their dot product to the product of their respective magnitudes, right? और इसका फिर हम मॉड्यूलस वैल्यू लेते हैं, क्योंकि यहां से कोई we are talking about the acute angle, तो acute जब बात करेंगे तो cos वहां पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, सो ये पॉजिटिव होगा. लेकिन v1 और v2 किसी समय ऐसे भी हो सकते हैं कि जब इनको डॉट करेंगे तो वो नेगेटिव भी आ सकता है, तो इसलिए हमने मॉड लिया है यहाँ पे. सो cos थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ और मॉड ऑफ v1 डॉट v2 डिवाइडेड बाय magnitude of v1 into magnitude of v2. This would be the expression for calculating the angle between vectors v1 and v2. But v1 is parallel to line first, v2 is parallel to line second. So if theta is the angle between lines first and second, then theta is the angle between vectors v1 and v2, right? So here we will first mention the given equations of lines are, the given equations of lines are, yes, first one is x minus 2 divided by 2 is equal to y minus 1 divided by 5, and that's equal to z plus 3 divided by -3. Keep it as first. And the equation of second line in Cartesian form is again x plus 2 divided by -1
and that's equal to y minus 4 divided by 8, and which is equal to z minus 5 divided by 4. We will keep this equation as equation number 2nd. So it is clear from the Cartesian equations of the lines that the line first is passing through the point 2, 1, minus 3 and is parallel to a vector with direction ratios 2, 5, minus 3. The line first is passing through a point. The line first is passing through a point. कौन से point में pass हो रही है? Yes, 2, 1, minus 3. 2, 1, minus 3. Because it is of the form x minus x1, y minus y1. तो ये होना चाहिए z minus z1. इसलिए z1 का वैल्यू -3 है. जब माइनस इंटू -3 करेंगे वही बनेगा +3, right? So is passing through the point 2, minus 1, 2, 1, minus 3 and is parallel to a vector suppose उसका नाम हम v1 रखेंगे with direction ratios. उस वेक्टर v1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? Yes, ordered 3 tuple of 2, 5, minus 3. Ordered 3 tuple of 2, 5, minus 3. That is, इसका क्या मतलब? अगर वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो हैं 2, 5, minus 3, तो डायरेक्शन रेशियो एक्चुअली क्या होते हैं? स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर. तो जब हमारे पास स्केलर कंपोनेंट्स है तो वी कैन फॉर्म द वेक्टर. सो देयरफॉर वेक्टर v1 किसके बराबर आएगा? दैट्स वेक्टर v1 मस्ट बी इक्वल, यस, 2i प्लस 5j minus 3k. Clear? तो मिला v1. Similarly from line second we can obtain vector v2. Also the line second passes through the point कौन से पॉइंट में पास हो रही है? Yes, -2, 4, 5. -2, 4, 5 and is parallel to a vector suppose इस वेक्टर का नाम हम v2 रखेंगे with direction ratios. उस वेक्टर v2 के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? with direction ratios ordered 3 tuple of, yes, -1, 8, 4. -1, 8, 4. That is, इसका क्या मतलब? अगर वेक्टर v2 के डायरेक्शन रेशियोज -1, 8 और 4 हैं तो वेक्टर किसके बराबर आएगा? That is, वेक्टर v2 must be equal to, yes, -i plus 8j plus 4k. तो मिला वेक्टर v1 यहां पे और यहां पे वेक्टर v2. अब अगर थीटा लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड के बीच में एंगल है तो थीटा वेक्टर v1 और वेक्टर v2 के बीच में भी वही एंगल होगा. तो देयरफॉर इफ थीटा इज द सपोज हम एंगल ले रहे हैं एक्यूट एंगल. Now if theta is the acute angle between lines first and second, then theta is the angle between their respective parallel vectors. Because v1 is parallel to line first and v2 is parallel to line second, between their respective parallel vectors v1 and v2, and is given by, तो वो एंगल जो है दो वेक्टर्स के बीच में वो कैसे हम निकाल पाएंगे? cos theta is equal to mod of v1 dot v2, because we are talking about the acute angle.
तो जब ये एक्यूट होगा तो कॉस का वैल्यू वहां पे पॉजिटिव आएगा, इसलिए मॉड ले रहे हैं, क्योंकि v1 डॉट v2 किसी केस में नेगेटिव भी आ सकता है। डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, स्केलर नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आ सकता है। So cos theta is equal to mod of v1 dot v2 divided by magnitude of vector v1 into magnitude of vector v2. So implies cos theta can be then written as, yes, mod of v1 dot v2. v1 is a vector expressed in terms of components, v2 is a vector expressed in terms of components, and we have to calculate their dot product. Dot product of two vectors in terms of their components किसके बराबर होता है? Sum of products of their corresponding rectangular components. यानी पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के साथ मल्टीपल, प्लस दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीपल, प्लस तीसरे को तीसरे के साथ मल्टीपल, राइट? तो क्या बनेगा? 2 into -1, so 2 into -1 plus, yes, 5 into 8, 5 into 8, yes, plus -3 into 4, so -3 into 4 divided by magnitude of vector v1. v1 का मैग्नीट्यूड, v1 एक ऐसा वेक्टर है which has been expressed in terms of components, and when a vector has been expressed in terms of components, its magnitude is directly equal to the non-negative square root of sum of squares of the scalar components, that is square root of 2 square plus 5 square plus -3 square. So that is square root of 2 square plus 5 square plus -3 square into square root of, similarly magnitude of v2 is then equal to -1 square, 8 square, 4 square. So -1 square plus 8 square plus 4 square implies, so that implies cos theta is equal to mod of, yes, 2 into -1, that's -2, plus 5 into 8, that is 40, and plus -3 into 4, that's -12, divided by square root of 2 square. 2 square is 4, 5 square is 25, 3 square is 9. So 25 plus 4, that is 29. 29 plus 9, that is 38, right? Into square root of, yes, -1 square, that is 1, 8 square, that is 64, and 4 square is 16. So 64 plus 1, that is 65. 65 plus 16, that is 81. Right? So implies cos theta is then equal to, yes, -2 -12, that is -14, and 40 -14 कितने आएंगे? 10 में से 4 तो 6, and 3 में से 1 तो that is 26. So mod of 26 divided by square root of 38 is square root of 38 into square root of 81 is actually 9. So पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए मॉड में से पॉजिटिव ही आएगा, तो cos theta must be then equal to 26 divided by 9 square root of 38. So operating cos inverse on both sides, cos inverse and cos will become an identity function. तो यहां क्या आएगा? Implies theta must be equal to cos inverse of 26 divided by 9 square root 3. 26 divided by 9 square root 3, cos inverse of must be the angle between these two lines whose Cartesian equations are x minus 2 by 2 equal to y minus 1 by 5 equal to z minus 3 by minus 3 and x plus 2 by minus 1 equal to y minus 4 by 8 and that's equal to z minus 5 divided by 4. तो इनके बीच में जो acute angle होगा that must be equal to cos inverse of 26 divided by 9 square root 3. Is that clear? Now the part second of this question number 11. Part second जो इस question number 11 का है
वो भी बिल्कुल इसी तरह आपके पास दो कार्टेशियन इक्वेशंस हैं, दो लाइंस की, और आपको चाहिए इन दो लाइंस के बीच में एंगल। तो फिर से आप बिल्कुल इसी तरह प्रोसीड करोगे। द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट में ये दो इक्वेशंस हैं जिनके बीच में हमें एंगल चाहिए था, और पार्ट सेकंड में ये दो डिफरेंट इक्वेशंस हैं लेकिन बिल्कुल इसी फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में दो लाइंस की इक्वेशंस हैं, एंड यू नीड टू फाइंड द angle between them. So you have to follow this first part of that question. So that is all about question number 11. Now we are on question number 12 of the same exercise 11.2, and this is a bit important question as far your examination is concerned. And here we have again the two equations of lines in Cartesian form. The equation of first line in Cartesian form is 1 minus x by 3 is equal to 7y minus 14 divided by 2p, and that's equal to z minus 3 divided by 2. And the equation of second line in Cartesian form is 7 minus 7x by 3p is equal to y minus 5 divided by 1, and that's equal to 6 minus z divided by 5. And it is given that these two lines are perpendicular to each other, and we have to find the value of this unknown p. हमें इस unknown p का वैल्यू चाहिए such that these two lines, line first and line second, which have been expressed in terms of Cartesian equations, are perpendicular to each other. But look at the structure of these two equations. Actually equation क्या होती है Cartesian form में? x minus x1, ये होना चाहिए था x minus 1, तभी तो आएगा x minus x1. सिमिलरली ये y minus y1, लेकिन यहाँ पे 7 मल्टीपल है, और तो यहाँ पे z minus z1, ये तो ठीक है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी होना चाहिए था x minus x1, लेकिन ये उस फॉर्म में नहीं है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन में ये दोनों इक्वेशंस नहीं है. तो पहले इनको लेके आएंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर हमें वहां से चाहिए x1 y1 z1, राइट. और इसी तरह यहाँ पे x2 y2 z2. क्लियर. तो कौन से पॉइंट्स में से ये पास हो रहा है, और इसके डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, इसके डायरेक्शन रेशो क्या होंगे. फिर जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डायरेक्शन रेशोज इज ऑलवेज 0, राइट. सो हम इक्वेशन फर्स्ट के डायरेक्शन रेशो निकालेंगे, लाइन सेकंड के डायरेक्शन रेशो निकालेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डायरेक्शन रेशो 0 के बराबर ले लेंगे, और वहां से आएगा द वैल्यू ऑफ अननोन p. The given equations of lines are yes, what are they? The equation of first line is 1 minus x divided by 3, and that's equal to 7y minus 14 divided by 2p, and that is equal to z minus 3 divided by 2. And the equation of second line is, yes, 7 minus 7x divided by 3p, that's equal to y minus 5 divided by 1, and that's equal to 6 minus z divided by 5. First, look at the structure of these two equations. They are not of the form x minus x1. Actually equation क्या होती है? x minus x1 by a equal to y minus y1 by b, and that's equal to z minus z1 divided by c. तो पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को लेके आएंगे इस फॉर्म में, वहां से मिलेंगे हमें a b c. That is the direction ratios of a vector parallel to the line, or we can say that direction ratios of the line, because ये वेक्टर जो होता है जिसके डायरेक्शन रेशियो a b c होते हैं, ये इस लाइन ये लाइन और वो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं. सो पैरेलल लाइंस और पैरेलल वेक्टर्स हैव आइदर सेम और प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियोज. तो एबीसी इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे. सिमिलरली हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेकंड निकालेंगे, तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो 0 के बराबर ले लेंगे, एज इट इज गिवन दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर. तो वहां से आएगा वैल्यू ऑफ p. तो सबसे पहले हमें इन दो इक्वेशंस को लेके आना पड़ेगा इस फॉर्म में, राइट. So implies this can be written as, look, it is 1 minus x, but instead of 1 minus x हमें होना चाहिए था x minus 1. तो कैसे आएगा? हम माइनस को कॉमन निकालेंगे, -1 को कॉमन निकालेंगे, राइट. तो वहां पे क्या बचेगा? ये 1 minus x है, ये बनेगा x minus 1. Is that clear? Divided by 3. या खाली माइनस को कॉमन लेके आएंगे, and that's equal to, ये 7y minus 14 है, होना चाहिए था y minus समथिंग, लेकिन ये 7y है, तो 7 को कॉमन लेके आएंगे, वहां पे क्या बचेगा? y minus 2. क्लियर. डिवाइडेड बाई 2p,
एंड दैट्स इक्वल टू z माइनस 3, ये तो ओरिजिनल फॉर्म में ही है, z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। एंड सिमिलरली यहां पे भी करेंगे, ये 7 माइनस 7x है, अगर 7 को कॉमन लेके आएंगे तो बचेगा 1 माइनस एक्स, लेकिन हमें 1 माइनस एक्स नहीं चाहिए, चाहिए x माइनस 1, तो माइनस 7 को कॉमन लेके आएंगे। जब माइनस 7 कॉमन आ रहा है, माइनस 7 कॉमन आ रहा है इस टर्म में से, तो बचेगा प्लस एक्स। जब माइनस 7 यहां पे कॉमन आ रहा है तो बचेगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3p, एंड दैट्स इक्वल टू यस y माइनस 5, ये तो ठीक है, y माइनस 5 डिवाइड बाई 1, एंड दैट्स इक्वल, ये z माइनस 6 होना चाहिए, तो माइनस को कॉमन निकालेंगे, बनेगा z माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5। इज दैट क्लियर? दिस फर्दर इंप्लाइज दैट, अब ये माइनस जो न्यूमरेटर में है इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो क्या बचेगा वहां पे, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 3, एंड दैट्स इक्वल, ये 7 जो यहां पे मल्टीपल है इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2p बाई 7। क्लियर? क्यों? क्योंकि एक्चुअली हमने लिया y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2p बाई 7, एक्चुअली है ये y माइनस 2 का अपना डिनोमिनेटर है 1, सो y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1। जब डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीपल में तो नीचे जो रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल होगा, सो दैट इज 7 डिवाइडेड बाई 2p। अब मल्टीपल कर दो 7 इंटू y माइनस 2, तो वही है 7 इंटू y माइनस 2, यहां पे 7 इंटू y माइनस 2, राइट, डिवाइडेड बाई 2p इंटू 1, दैट्स 2p। इज इट क्लियर? सो 7 को नीचे लिया तो ये बचेगा y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2p बाई 7, एंड दैट्स इक्वल, इसको ऐसे ही रख लेते हैं, दैट इज z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। एंड दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, इसी तरह इस माइनस 7 को भी 3p बाई 7 लिखेंगे, तो ये यहां पे क्या बचेगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3p डिवाइडेड बाई माइनस 7, या माइनस 3p डिवाइडेड बाई 7। क्लियर? एंड दैट्स इक्वल, ये वाली टर्म तो ठीक है, दैट इज y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1, एंड दैट्स इक्वल, माइनस को डिनोमिनेटर में ले लो तो वहां पे बचेगा z माइनस 6 डिवाइडेड बाई माइनस 5। अब keep this line as equation number first and this one as equation number second. The direction ratios, or first we can say that the equation first passes through the point 1, 2, 3 and is parallel to a vector whose direction ratios are minus 3, ordered 3 tuple of minus 3, 2p by 7 and 2. Similarly, the line second passes through the point 1, 5, 6 and is parallel to a vector whose direction ratios of are ordered 3 tuple of minus 3p by 7, 1 and माइनस 5। लेकिन हमें पॉइंट से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इस समय दे रखा है कि these lines are perpendicular। When lines are perpendicular, we should deal with the direction ratios। तो सबसे पहले हम निकालेंगे direction ratios of line first और line second। Therefore, direction ratios of line first are, direction ratios of line first are, yes, what are they, ordered 3 tuple of minus 3 2p by 7, minus 3 2p by 7 and 2. Similarly, direction ratios of line second are, what are the direction ratios of line second here? Yes, ordered 3 tuple of minus 3p by 7, so ordered 3 tuple of minus 3p by 7, 1 and minus 5. Now it is given that these two lines are perpendicular, so the sum of products of their direction ratios must be equal to 0. ये एक्चुअली डायरेक्शन रेशियोज वेक्टर्स के होते हैं जो ये इन लाइन्स पे पैरेलल होते हैं, तो minus 3 2p by 7 this 2 must be the direction ratios of that vector which is parallel to line first, but since they are parallel they must have either same or proportional direction ratios। तो इसीलिए हमने डायरेक्टली लाइन के ले लिए, तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो यही होंगे minus 3 2p by 7 2 लाइन फर्स्ट के, और लाइन सेकंड के minus 3p by 7 1 and minus 5। now since they are perpendicular, now since the line is first and second
The lines first and second are perpendicular to each other, are at right angles to each other. Therefore, तब क्या होगा? Sum of products of their direction ratios must be equal to 0. So minus 3 into minus 3p by 7. Minus 3 into minus 3p divided by 7 plus, yes, 2p by 7 into 1. So 2p divided by 7 into 1 plus 2 into minus 5. So 2 into minus 5 must be equal to 0. Because when two lines are perpendicular, obviously the sum of products of their direction ratios is 0. Okay, solve the equation. What we will get implies this can be written as minus 3 into minus 3p, that's plus 9p divided by 7, and 2p into 1, that is plus 2p by 7, and minus 2 5s are 10 is equal to 0. Implies 9p 2p डिनोमिनेटर सेम है तो 9p plus 2p बनेंगे 11p डिवाइडेड बाय 7. कॉमन डिनोमिनेटर है उसको कॉमन ही रख दिया तो ऊपर ऐड होगा 9p plus 2p दैट्स 11p. तो माइनस 10 को उस साइड में ले लो तो बनेगा प्लस 10. Implies 11p must be equal to 7 into 10, that's 70. So implies p must be equal to 70 divided by 11. So the value of this unknown p must be, this value p, the value of this p must be 70 divided by 11, such that these two lines, line first and line second, are perpendicular to each other, right? तो यही था कि ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है और हमें निकालना था वैल्यू ऑफ पी. तो वैल्यू ऑफ पी क्या आएगा सच दैट द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, दैट इज none other than 70 divided by 11. So all about question number 12. Now we are on question number 13 of the same exercise, and in that question number 13 we have again two lines represented in terms of their Cartesian equations, and we have to prove that these two lines are perpendicular. The equation of first line is x minus 5 divided by 7 is equal to y plus 2 divided by minus 5 is equal to z divided by 1. तो z divided by 1 को लिख सकते हैं z minus 0 divided by 1, right? Similarly, for equation second, we have x divided by 1 can be written as x minus 0. This can be written as y minus 0. This can be written as z minus 0. So means this line passes through the point 5 minus 2 0, and this line passes through the point 0 0 0. If it is passing through the point 0 0 0, obviously line second must be the equation of that line which is passing through the origin. Clear? So हमें प्रूव करना है कि ये दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर है. तो दो लाइन्स परपेंडिकुलर कब होती हैं? If the sum of products of their direction ratios is 0. हम लाइन फर्स्ट के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, लाइन सेकंड के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, उनका सम एंड सम ऑफ प्रोडक्ट करेंगे. अगर वो 0 के बराबर आ रहा है तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर. तो क्या होंगे लाइन फर्स्ट के डायरेक्शन रेशियो? 7 minus 5 1. एक्चुअली 7 minus 5 1 उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं जो वेक्टर इस लाइन पे पैरेलल होता है, यानी ये लाइन और वो वेक्टर आपस में पैरेलल होता है, उसके डायरेक्शन रेशियो होंगे 7 minus 5 1. लेकिन पैरेलल लाइन्स हैव आइदर सेम और प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियोज. तो लाइन फर्स्ट के भी डायरेक्शन रेशियो यही बनेंगे 7 minus 5 1 ऑर्डर 3 टपल. इसी तरह लाइन सेकंड के डायरेक्शन रेशियो क्या बनेंगे? 1 2 एंड 3. फिर इन डायरेक्शन रेशियोज का सम ऑफ प्रोडक्ट कर देंगे. अगर वो 0 के बराबर आ रहा है तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर. द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ the direction ratios of line first are, yes, what are they? Ordered 3 tuple of 7 minus 5 1. Similarly, the direction ratios of line second are, what would be the direction ratios of line second? Yes, ordered 3 tuple of again 1 2 3. So 1 2 3. Now we will find actually the sum of products of the direction ratios. So therefore पहला डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, so 7 into 1 प्लस यहाँ पे -5, so -5, यहाँ पे 2, so -5 into 2.
क्लियर। और यहां पे तीसरा डायरेक्शन रेशियो 1 है, यहां पे 3 है, सो +1 × 3. Is that clear? Now that's equal to 7 1s are 7, 5 × 2 that's -10 plus 3. Now 7 plus 3 that's 10, 10 minus 10 must be equal to 0. तो इसका क्या मतलब, sum of products of the direction ratios of two lines is 0. So lines must be perpendicular. That is the sum of products of, that is the sum of products of direction ratios, sum of products of direction ratios of line first, yeah, lines first and second is 0. जब दो लाइन्स के डायरेक्शन रेशियो का सम ऑफ प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा, सो ऑब्वियसली वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी. देयरफॉर लाइन्स फर्स्ट एंड सेकंड, therefore lines first and second are perpendicular to each other. Therefore lines first and second are perpendicular to each other. So that's all about question number 13 of this exercise.